Uh, in the chain of sixth online PowerPoint presentation, today here we together myself, Assistant Professor Swarn Singh, ST College Barnala. Today, a much needed topic, because we have already done 5 online PowerPoint presentations. The first one made by Miss Prinka, topper of PG department BCom, ST College Barnala, on introductory part of cost accounting. Next, Miss Dia, second OPPT. Miss Dia, expert in cost accounting with cost specialization with cost classification. Third one, a very charming personality of PG Department of Commerce, Mr. Ekant Bansal, on cost audit. They all are done very well in their topic. They all are look like a cost accounting expert. Now, after the flourish information of cost accounting, today's much needed topic, the ideal cost system. By Ms. Komal, one of our next expert. Ms. Komal is the student of BCom final year 5th semester of ST College Barnala, and my dear colleagues, especially Assistant Professor Liza Roy, and by very heart-touching, very impressionable class, my near dear students, philosophers, scholars, very warm welcome to all of you people, and very good morning to all of you people from my side. Today's a very most important topic of this subject, cost accounting 1, the BCom final year, ideal cost system. Ideal itself a word is very unique, very impressive, inspirational. So that's why this topic is most important. I do not want to waste much of your time between today's keynote speaker, eminent presenter, Miss Komal, and very impressive students. Today's topic, her topic, ideal cost system. One, she covered 2 topics today. One is the ideal cost system, and next one is also she covered
role of accountant in organization. This is another topic she also discussed. Best of luck by Rajni Balla, YouTube champion. Over to Miss Komal. Thank you, sir. Good morning to all. Today, we are going to discuss about ideal cost accounting system and role of cost accountant in an organization. So, I am going to start with the essentials of a good costing system. Before going ahead, firstly, we have to understand that what is costing system. Costing system ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? Costing system. It comprised of set of forms, processes under which cost is ascertained. Costing system ਇੱਕ forms ਦਾ set ਹੁੰਦਾ ਹੈ, forms ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ cost ਨੂੰ record ਕਰਦੇ ਹਾਂ, processes ਜਿਨ੍ਹਾਂ cost ਨੂੰ analyze ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ cost ਨੂੰ ascertain ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ cost ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਰਟੇਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੋਸਟ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਅਸਰਟੇਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਟਰਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਸਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਲੈਵਲ ਤੱਕ, ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਆਫ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਐਂਡ ਅਗਰ ਕੋਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਅਸਿਸਟਿੰਗ ਇਨ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ, ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈ ਸਕੀਏ। Essentials of ideal costing system, or we can say characteristics of a good cost accounting system. Suitability to the business, the very first one, suitable to the business. A good cost accounting system is according to the requirements, size, need of the business. एक good costing system वही होएगा जो बिजनेस दियां रिक्वायरमेंट्स, उसके साइज ते उसके नीड्स के अकॉर्डिंग होएगा। That system which provide necessary or accurate information is the ideal costing system. एक ideal costing system वही होएगा, एक good costing system वही होएगा जो बिजनेस ਨੂੰ ऑर्गेनाइजेशन ਨੂੰ necessary ਤੇ accurate information provide करेगा। सो एक आइडियल कोस्टिंग सिस्टम का बिजनेस के लिए सुटेबल होना बहुत जरूरी है। सेकेंड वन, सिंपलिसिटी, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एन आइडियल कोस्टिंग सिस्टम। एक आइडियल कोस्टिंग सिस्टम का सिंपल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि इंटेलिजेंसी का बंदा भी उसनों अंडरस्टैंड करन दे एबल होवे कि कितनी कॉस्ट पै रही है। अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो उसनों रिड्यूस कर सके हो, मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल होना चाहिए ताकि वो हर चीज़ को अंडरस्टैंड करन दे एबल होवे। सारे फैक्ट्स या फिगर्स या जो भी इंफॉर्मेशन कॉस्टिंग नाल रिलेटेड है वो बहुत ही सिंपल ते अच्छे तरीके नाल प्रेजेंट होनी चाहिए कॉस्टिंग सिस्टम दे विच ताकि हर एक डिपार्टमेंट का मैनेजर, हर एक एग्जीक्यूटिव उस प्रॉपर इंफॉर्मेशन, उस एक्यूरेट इंफॉर्मेशन यूज कर सके ते उस तो बेनिफिट्स ले सके। So our ideal costing system should be a very simple.
Next one, flexibility. Flexibility means easy to change, adopt changes. अपना ideal costing system, एक good costing system should be a very flexible, ताकि वो business या requirements के according, business या needs के according changes ला सके. Because in our business environment there are frequent changes occur, like there are technological changes also, there are economical changes also, or there are political changes also. So, but if our costing system is rigid, then it will be failed. So, अपना costing system बहुत fully flexible होना चाहिए, because एक business ਨੂੰ successfully run ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ business ਦਾ अपने environment ਦੇ according change होना बहुत ज़रूरी ਹੁੰਦਾ है. So, एक ideal costing system ਦਾ business environment ਦੇ according changes ਲਿਆना बहुत ज़रूरी है. So, एक ideal costing system should be a fully flexible. Next one, economical. The very important thing, a very important characteristics of an ideal costing system. एक ideal costing system ਦਾ economical ਹੋਣਾ, ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਉਸ ਇੰਨੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਕੋਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ all the costs incurred in adopting expensive costing system is adds up in the cost of the final product, because ਇੰਨੇ expensive system ਨੂੰ adopt ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ cost ਪਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ increased cost ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਉਸ organization ਦੇ final product ਦੇ ਵਿੱਚ add ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ final product ਦੀ cost increase हो जाएगी and the customer will not able to afford that much expensive product. The customer उस इन्ने expensive product ਨੂੰ afford ਕਰਨ ਦੇ able नहीं होएगा. So costing system is not too much expensive. It should be economical, because costing system ਦਾ main motive ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ system ਦੀ ਸਾਰੇ products ਦੀ cost ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ profit ਕਮਾ ਸਕੀਏ, so that our product is not too much expensive or our customer will able to buy that product easily. So our ideal costing system should be economical, not too much expensive. Next one, comparability. एक good costing system ਦਾ comparable होना बहुत ज़रूरी है. A good costing system should be comparable, so that we compare the figures of the previous years with the present. एक good costing system ਦਾ comparable ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ previous year ਦੀਆਂ past figures ਨੂੰ present ਦੇ ਨਾਲ compare ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਆਪਣੀ cost ਜਿੰਨੀ ਜੋ increase ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ decrease ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. And a good costing system provides all such information. A good costing system ही ये सारी information provide कर सकता है. So a good costing system दा एक ideal costing system दा comparable होना बहुत ज़रूरी है. Next one, support of executives. Without the support of the top management or the departmental executives, cost accounting system is nothing. एक good costing system, एक ideal costing system ਨੂੰ ideal costing system ਨੂੰ top management ਦੀ ਤੇ departmental executives ਦੀ support ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, because for the success of the cost accounting system it is very important that top management and executives give their help and support to the costing system. एक good costing system ਦੀ success ਦੇ ਲਈ top management executives ਦੀ cooperation, ਉਹਨਾਂ ਦੀ help ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ support ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ costing system ਇੱਕ good costing system ਇੱਕ ideal costing system ਬਣ ਪਾਵੇਗਾ.
So there should be the support of the executives to become an ideal costing system. Next one, integrated. Cost accounting system ਅਜਿਹਾ ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਕੀ ਅਦਰ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੇ ਮਤਲਬ there should the cost accounting system should be such that it can be integrated with other systems. A cost accounting system ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕੇ other systems like financial accounting, taxation, operation research and all. ताकि इन्हां सारे सिस्टम्स दे नाल इंटीग्रेटेड होना चाहिए कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ताकि आपां नूं एक कंप्लीट ओवरव्यू मिल सके ते क्लैरिटी होवे अपने रिजल्ट्स दे विच. So a good costing system should be integrated, should be cooperation and the coordination with other systems also. Next one, accuracy. So the data used in the cost accounting system should be accurate and authenticate. जो भी एक डाटा आप यूज करते हैं कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ fully accurate ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ authenticate ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. There should not be any unnecessary details. कोई भी unnecessary stuff नहीं होने चाहिए cost accounting system एक ideal cost accounting system ਦੇ ਵਿੱਚ because इन्ना unnecessary stuffs ਨੂੰ इन्ना unnecessary datas ਨੂੰ unnecessary details ਨੂੰ collect ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ resources ਤੇ time waste ਹੁੰਦਾ ਹੈ. So there should not be any unnecessary details to make an ideal costing system. If the data in the cost accounting system should not be accurate or authenticate, it distorts the output system and the wrong decisions may be taken. Wrong decisions भी लिखे जा सकते हैं अगर एक costing system accurate ਤੇ authenticate नहीं होएगा. Last one, prompt reports. एक ideal costing system अजिहा होना चाहिए है जो present करे information at the desired time. Quickly information provide करे ਜਦੋਂ ਵੀ management ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ business ਨੂੰ organization ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ information ਦੀ ਇੱਕ good costing system ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ information ਨੂੰ ਉਸ management ਨੂੰ quickly promptly ਉਸ information ਨੂੰ present ਕਰ ਦੇ ਉਸ information ਨੂੰ immediately present ਕਰ ਦੇ. Presenting reports immediately when management wants for the quick decision making. There should not be any delays. कोई भी delays नहीं होने चाहिए. एक ideal costing system अजिहा होना चाहिए जो prompt होवे. In our present days, we are using computers, so reports are on fingertips. There should not be any question of the delays also. So this is all about the essentials of a ideal costing system. So next we are going to discuss about the role of cost accountant in an organization. Cost accountant ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਮਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾਣਾਂਗੇ ਵੀ ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ who is cost accountant. So cost accountant is a financial specialist who examines all the costs involved in a business activity or a production process in order to help managers to decide how to make profits. Cost accountant एक financial specialist ਹੁੰਦਾ है जो business activities ਦੀ ਤੇ production process ਦੀ cost जो भी cost incurred हो रही है जो भी उस activities ਦੇ ਵਿੱਚ cost involved है ਉਹਨਾਂ सारी cost ਨੂੰ examine करता है ताकि वो help कर सके managers ਨੂੰ to decide how to make profits.
The prime role of a cost accountant is to support finance director in business planning and cost control. The main role, prime objective ਕੀ ਹੈ cost accountant ਦਾ business planning ਦੇ ਵਿੱਚ help ਕਰਨਾ ਤੇ cost ਨੂੰ control ਕਰਨਾ. So now we discuss the role of cost accountant in an organization. Cost accountant ਦਾ role ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ organization ਦੇ ਵਿੱਚ. The very first one, cost ascertainment. Cost ascertainment is the main role of the cost accountant in the organization. Cost ਨੂੰ ascertain करना बहुत important role है cost accountant ਦਾ. Cost accountant ascertains the requirement of cost information which may be useful to organizational managers at different levels of hierarchy. Cost accountant सारी cost information ਦੀ ascertainment करता है ताकि वो help कर सके और जो भी वो information वो ascertain करता है वो सारी information different levels से organizational manager ਦੇ ਲਈ useful होवे. So a cost accountant plays a very important role in the ascertain cost. Second one, cost report. A cost accountant also plays a key role in the preparation of cost reports. Cost accountant which एक key role play करता है, बहुत important role play करता है. These reports help the executives of the business concerned in reviewing their own performance and in identifying the weak areas. जो भी reports एक cost accountant तैयार करता है, उन्हें reports तो उस business concern ਦੇ executives, उस business concern ਦੇ different departments ਦੇ managers ਦੀ performance ਨੂੰ review ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ जो भी weak areas ਨੇ ਉਸ organization ਦੇ ਵਿੱਚ जो भी weak points ਨੇ, weaknesses ਨੇ, deficiencies ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ identify ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ effective measures ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ enough control ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ in future ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ deficiency occurs ਨਾ ਹੋਣ in future. Next one, cost comparison. The very important task performed by the cost accountant. A cost comparison is the task carried out by cost accountant for controlling the cost of the product manufactured by the concern. Cost accountant जो भी product manufacture किया गया concern ਦੇ द्वारा उसनु control ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ task perform करता है. Cost accountant of the concern establish standards for all the costs or finished product also. A cost accountant उस concern ਦਾ उस organization standards establish करता है सारे elements of the cost ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ finished product ਦੇ ਲਈ. Then ਉਹਨਾਂ standards ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ cost accountant ਦੇ ਦੁਆਰਾ establish ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ standards ਨੂੰ compare ਕਰਦਾ ਹੈ actual cost ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ variances ਨੇ differences ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ determine ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ascertain ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ variances ਦੇ occur ਹੋਣ ਦੇ reasons ਕੀ ਨੇਗੇ ਕਿਉਂ ਇਹ variances occur ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਤੇ ਇੱਕ suitable actions ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ variances ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ differences ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. The next one, decision about funds. Cost accountant सिर्फ cost ਨੂੰ analyze ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ funds ਦੇ related decisions ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ. A cost accountant is responsible for collating and analyzing all financial information related to an organization. Cost accountant इस चीज ਦੇ ਲਈ ਵੀ responsible ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ organization ਦੇ ਨਾਲ related जो भी financial information है उसਨੂੰ analyze करे
and this helps the managers in planning and controlling of funds. ਤੇ ਉਸਦਾ ਇਹ analysis helps ਕਰਦਾ ਹੈ business planning ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ funds ਨੂੰ control ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. Next one, monitoring purchase orders. Cost accountant job involves knowledge of purchasing policies, its proceeding, as well as monitoring purchase orders. Cost accountant cost analysis ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ purchasing policies ਦੀ knowledge ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ purchase orders ਨੂੰ monitor ਕਰਨ ਦੀ knowledge ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ it should be make sure that no orders of raw material are unnecessary ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ surety ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ order unnecessary orders ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਥੇ. Next one, maintaining data. Data ਨੂੰ maintain करना is the key role of a cost accountant. It is the duty of the cost accountant to maintain a strong system of internal control. एक बहुत ही important duty है cost accountant ਦੀ ਇੱਕ strong internal control system ਨੂੰ maintain करना ਇੱਕ ਉਸ organization ਦੇ ਵਿੱਚ assets ਦੀ accounts ਦੀ safety रवे ते cost system ਨੂੰ maintain ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ properly. So it is the main duty, the prime role of the cost accountant to maintain data properly and having a very strong system in the organization. The last one, resolving accountancy issues. It is the main role of cost accountant to identify and solve issues related to accountancy. Cost accountant ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ important role ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ issues ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ organization ਦੇ ਵਿੱਚ accountancy ਨਾਲ related ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ issues ਨੂੰ identify ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ identification ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ solve ਵੀ ਕਰੇ through proper budgeting, cost control or avoiding unnecessary expenses and so on. ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ measures ਨੂੰ use ਕਰਕੇ ਇੱਕ cost accountant ਨੂੰ ਸਾਰੇ issues ਨੂੰ solve ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. So this is the main role of the cost accountant in an organization. Thank you. Thank you, Komal. Thank you. Very comprehensive lecture. Some of the students joined later. So I will discuss here that we all are present over here. 6th online PowerPoint presentation made by Ms. Komal on the topic the ideal costing system and role of accountant in an organization. The presentation is over. It is both the topics are so simple, but the presentation made by Ms. Komal of BCom final year student, BCom final year student, PG Department of Commerce, ST College Barnala. Very comprehensive manner. Komal, बहुत अच्छे बेटा. Thank you, sir. Any queries? Otherwise, topic is very crystal clear. But फिर भी little bit. Thank you, Priyanka, Mittal. No queries. Because of everything is almost clear by Ms. Komal.
बहुत अच्छा बेटा। Next, we turn about another to meet another expert of our PG Department of Commerce, SG College Barnala, Miss Wrinkle. She is also a management expert. Last Thursday on her topic is also the clear introductory part of management counting, followed by another expert, Rajni Balla, YouTube champion. I generally call that YouTube champion. After this OPPT, next turnabout Gunjan Singla, next Shubham, after that Shubham Goyal. They all are expert of management accounting. And now I would like to invite another expert of management accounting, Wrinkle, to conclude whole of the activity. Over to Wrinkle. Good morning to all. Myself Wrinkle, student of ST College Barnala. Today I am here to give the brief or overview of Komal's presentation. Miss Komal gives a very informative and excellent presentation. She speaks like a native speaker and makes this environment very informative. So first of all, she tells about ideal costing system. What is costing system? Costing system, she defines that costing ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਜੋ कि ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਐਸਰਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। तो उसने उस तो बाद essential फीचर्स दसे, आप कह सकते करैक्टरिस्टिक्स जो कि एक आइडल कोर्स सिस्टम दे विच होने चाहिए नेगे। सो फर्स्ट वन इज रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट सी, सेकंड वन इज सिंपलिसिटी। आइडल कोस्ट की है जो मैनेजमेंट नू रिक्वायर है उसनू पूरा करदा होवे, बिजनेस दे विच जो कुछ चाहिए है उसनू एक्यूरेट ते आप कह सकते हैं सही तरीके नाल मैनेजमेंट नू प्रोवाइड करिए कर सकदा होवे, सिंपल होवे, फ्लैक्सीबल होवे, क्योंकि बिजनेस दे विच फ्रीकुएंट चेंजेस अक्कर हुंदे ही रहंदे नेगे। जिवें कि आप कह सकते हैं टैक्नीकल चेंजेस हो गया, पॉलिटिकल चेंजेस हो गए। सो उस सब नू मीट करन दे लई एक आइडल कोस्टिंग सिस्टम दा फ्लैक्सीबल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो इकोनॉमिकल होना चाहिए है, कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए है भी। आप जो अपनी इस बार जो अपने कोस्ट सिस्टम कोस्टिंग नू मेजर किया है उसनू प्रीवियस ईयर दे नाल आप कह सकते कंपेयर करके देखा जा सके। दैन उसने दसी सी सपोर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव विदाउट मैनेजमेंट और विदाउट टॉप मैनेजमेंट आप कह दिए भी आइडल कोस्टिंग एक कोस्टिंग सिस्टम नू नहीं परफॉर्म कर सकते हैगे। तो नैक्सट वन इज इंटैग्रेटेड होना चाहिए है, एक्यूरेसी होनी चाहिए है, तो प्रॉम्प्ट रिपोर्ट्स होनी चाहिए ने। प्रॉम्प्ट रिपोर्ट्स मीनस इमीडिएटली आपां रिजल्ट्स प्रिपेयर करके दे देवे। So next one is she tells about the cost accountant, role of cost accountant in the organization, in an organization. So first of all she tells about the meaning of cost accountant. Who is cost accountant? Cost accountant जो एक तरह नाल आप कह सकते हैं फाइनेंशियल स्पैशलिस्ट होवे जो कि कोस्ट नू एग्जामिन करके एक मैनेजर दी हेल्प करे प्रॉफिट्स नू आप कह दिए प्रॉफिट्स नू रिसीव करन दे लई। तो उसका की रोल है एक ऑर्गेनाइजेशन दे विच ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਐਸਰਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫਾइंड ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਸਟ ਦੀ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਕੋਸਟ ਦੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਕੋਸਟ ਦੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੰਡਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਵੀ उसका एक फंक्शन है जो कि ऑर्गेनाइजेशन दे विच परफॉर्म करता है। एंड अकाउंटेंसी दी इशूज़ नू जो मेन प्रॉब्लम्स ने उसनू सॉल्व करता है बाय द विद द हेल्प ऑफ कोस्टिंग, बजटिंग जो आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड्स वगैरह बना के। ओवरऑल शी गिव्स अ वेरी नाइस प्रेजेंटेशन ऑन
Ideal costing system and the role of accountant in an organization. Thank you. Thank you, Wrinkle. Thank you, Komal. Next, a 2 days center stage personality. The students are most excited to see her, none other than our 2 days PG Department of Commerce Assistant Professor Liza Roy. The students are very excited to see her in the presentation, online PowerPoint presentation. Little bit introductory part, introduction about Assistant Professor Liza Roy. She has done their +2, her +2 from Sacred Heart School, Raipur Road, Barnala. Done her BCom and MCom from ST College Chandigarh. The city beautiful. You know, देख के मैंने ऐसा लगता कि she is very energetic, dedicated. भी इन्होंने जो सारे Sacred Heart School, जो ST College चंडीगढ़ की लाज रखी है, इन्होंने देख के लगता कि PG Department of Commerce, ST College Barnala, the future brilliant. So I hope that she also bless the student, motivate, inspire the student. So little bit say a few words, ma'am, please. Yes. Over to Liza, ma'am. Thank you, sir. Thank you for so much appreciation. Good noon, everyone. Good noon, students. Firstly, I hope you are doing good. Firstly, I would like to congratulate the entire team, all the students of BCom final year, and obviously the Swan sir, Professor Swan sir, for taking such a commendable initiative. I'm really impressed by the presentation of Komal and very nicely summed up by Wrinkle. See students, this pandemic has taught us so much. इस पैंडेमिक में हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है चेंज इज कांस्टेंट, चेंज इज इनएविटेबल, ये हमने आज इस बार विटनेस किया है, राइट? चेंज आया, पैंडेमिक आया, वी immediately had to switch from the offline physical classes से we had to switch from to the online classes. Online classes और online classes successful हुई, क्यों हुई? Because of the efforts of you people and our efforts also, right? So with this online classes, Swan sir has taken such a great initiative of conducting the co-curricular activities also online. Be it logo competition, the OPPT presentations. See students, these presentations, these co-curricular activities की importance आपको अब नहीं समझ आ रही है. आपको लग रहा होगा कि या इसका कौन सा एग्जाम्स में कुछ बेनिफिट है या फिर टाइम वेस्ट है. देयर आर स्टूडेंट्स जिनको ये लगता है, बट लेकिन द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज प्रेजेंटेशंस यू रियलाइज इन द लॉन्ग टर्म में आपको इसकी प्रेजेंटेशन, इसकी बेनिफिट का पता चलेगा. सी दीज को करिकुलर एक्टिविटीज डेवलप अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इन यू. ये कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं एंड दिस सेल्फ कॉन्फिडेंस, आई टेल यू, बिलीव मी, विद दिस सेल्फ कॉन्फिडेंस यू कैन मूव द माउंटेन्स. This self-confidence is so much important. This self-confidence is going to help you throughout the life. Right, students? So, I would say कि maximum participation होनी चाहिए. Most of the students are taking the part. Most of students are active in these presentations. But लेकिन be continuous, be active, and others should also take part in these presentations. Students, these co-curricular activities are so much important. जो academic score होता है वो it matters but to some extent. जो confidence है, academic सबका नहीं interest होता,
नो बट देर आर स्टूडेंट्स जो अकेडमिक्स में स्टडीज में जिनको इंटरेस्ट नहीं है, बट यू नीड टू रिकॉग्नाइज, यू नीड टू आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट और कॉन्फिडेंस रखो, उसके लिए मेहनत करो, वर्क हार्ड फॉर दैट, यू विल अचीव दैट। जरूरी नहीं है कि अकेडमिक्स में स्कोर अच्छा हो। देर आर मेनी एग्जाम्पल्स जो अकेडमिक्स में, देर आर स्टूडेंट्स जो अकेडमिक्स में अच्छे नहीं है बट दे हैड इंटरेस्ट इन सम अदर फील्ड, बी बेकिंग, लैंग्वेजेस, स्पोर्ट्स, किसी का एंटरप्रेन्योर माइंड होता है, कोई क्रिएटिव पेंटिंग में इंटरेस्ट है, डांसिंग, सिंगिंग, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। तो कुछ भी हो सकता है, इट इज नॉट नेसेसरी, बस अपना इंटरेस्ट डेवलप करो, उसके लिए फोकस करो। The other day I was listening to an interview of Priyanka Chopra. She said कि I want everything. She said I want everything and there's nothing wrong in it. वो कहती मेरे को सब कुछ चाहिए, I want to eat the whole cake. Be greedy for everything. Try to learn everything. सब कुछ learn करने की you should have the passion to learn everything. Students, हर चीज obviously that should not be at the cost of anybody else, but लेकिन you should try to learn everything जिसमें आपका इंटरेस्ट है स्टडीज में. everything should be balanced. बैलेंस बनाना सीखो कि स्टडीज में एंड दी अदर एक्टिविटीज ऑल्सो. स्टूडेंट्स, वी आर फॉर्चुनेट इनफ, वी हैव द सपोर्ट ऑफ आवर पेरेंट्स. हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ा रहे हैं, दे ओनली एक्सपेक्ट अस टू स्टडी, राइट. हमें सिर्फ पढ़ना है, थोड़ी उनको हेल्प करनी है, बस यही है. लाइफ इज मच मोर टफ फॉर सम पीपल, नॉट एवरीबडी इज एज फॉर्चुनेट एज अस, राइट. तो अपना स्टडी पे फोकस रखो, एवरीथिंग यू लाइक वो करो. फिर मेंटल पीस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. मेंटल पीस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. वो काम कर रहे हो जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, दैट डज नॉट मेक अ सेंस. द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस, राइट. तो वो हैप्पीनेस किससे आएगी? जिसमें आपका इंटरेस्ट है. और इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट को आप फॉलो कब कर सकते हो? व्हेन यू हैव द कॉन्फिडेंस टू डू दैट, right. When you have the confidence, then only you can follow your passion, then only you can work on your interest. There are people who are not as fortunate as us. हमें अपना पैशन फॉलो करना है, अपना जो ड्रीम्स हैं उनको अचीव करना है, एंड वी ऑल्सो हैव द ड्यूटी टू रीपे बैक टू आवर सोसाइटी. अपनी सोसाइटी को पे बैक भी करना है. जो भी हम सिविल सर्विसेज में पीपल आर गोइंग, दे वर्क फॉर द सोसाइटी. टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन, बी इट एनी प्रोफेशन, द डॉक्टर्स. सी, आई नो दिस इज नॉट आवर फील्ड, बट लेकिन कोई भी फील्ड है, वी कैन सर्व द सोसाइटी. यू माइट हैव सीन मूवी सुपर 30. सुपर 30 में द प्रोफेसर ऑफ बिहार, आनंद कुमार की स्टोरी है वो. दैट इज अ रियल लाइफ स्टोरी. उसके यूट्यूब पे आप देखना, आनंद कुमार की वो वीडियोस भी हैं, जो एक्चुअल रियल आनंद कुमार है उनकी वीडियोस भी हैं. सी, ही गॉट द एडमिशन इन द फॉरेन यूनिवर्सिटी. कैम्ब्रिज में उसकी एडमिशन हो गई थी. स्टिल ही कुड नॉट अफोर्ड टू गो देयर. देन ऑल्सो ही थॉट ऑफ पेइंग बैक टू द सोसाइटी. उसने फ्री में ट्यूशंस दी. See, there are lot many examples की. What I want to say is, अपना passion follow करो, respect your parents. The happiness, the mental peace matters the most, and you also have the duty to repay back to the society. Final year में हो गए हो आप. You have few months left. अपना इंटरेस्ट देखो, किस चीज में इंटरेस्ट है, start working for it. आई नो ये फाइनल ईयर में प्रेशर हो जाता है कि कॉलेज खत्म हो जाएगा, शुड वी गो फॉर मास्टर्स, शुड वी गो फॉर जॉब, या फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना है, कुछ भी, एनीथिंग जो भी आप करते हो, जस्ट बी डिटर्मिन्ड फॉर दैट. कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, एनी सजेशन, एनी गाइडेंस यू नीड, वी टीचर्स आर ऑलवेज देयर विद यू. The PG Department of Commerce is there with you. Any guidance you need, you can anytime refer to anybody of us. At last, I would conclude कि dream big, dream high,
and give your 100%. I always say, see, हम अपनी तरफ से मेहनत कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से 100% दे सकते हैं, बाकी देखा जाएगा. हम तो अपनी तरफ से हार्ड वर्क कर सकते हैं ना. What is in our hands? In our hands, we only can do hard work. और ऐसा होता ही नहीं है. एक बार होगा, 2 बार होगा कि if we fail, but लेकिन कोई कमी होगी जिसकी वजह से फर्स्ट टाइम में हम सक्सेसफुल नहीं हुए. You will achieve your dream. The hard work is the only key to success. And you also need to take part in these type of activities. These type of activities develop confidence in you. And confidence is the boat in which you can ride and reach your destination. So last, congratulations everybody. Congratulations for such a active participation and making the efforts and the initiative of Swan sir and the PG Department of Commerce a success. Good wishes, best wishes for the future. Okay, thank you. Thank you लिजा मैम. इस तरह लग रहा ਸੀਗਾ ਕਿ मैडम ਨੂੰ सुनी चाहिए है ना. कितना अच्छा मैडम ने मोटिवेट किया, तो बहुत अच्छा लगा मैडम जी. थैंक यू. मैं भी बेटा बच्चे ਤੁਹਾਨੂੰ कहना चाहांगा भी मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है ना. तो इस करके कोशिश जारी रहनी चाहिए बेटा. ठीक है, जिथे भी हो सके तो हार्ड वर्क, कॉन्फिडेंस, मैंटल लैवल जिन्ना डिवेलप होगा. अकैडमिकली तो ठीक है, बाकी दी चीज़ें सानू अगे नाल दी नाल होके जाना पवेगा किसी भी एक्टिविटी च. ठीक है, तो अच्छा लगे मैम. थैंक यू. बड़ा बबलिंग वॉइस है मैडम की, ऐ लगता सी बार बार सुनी चलीए है ना. इस तरह लग रहा है मैडम का लेक्चर चल रहा है. लेक्चर थोड़ा ही सी, मैंने चांस दिता तुसी. नहीं. थैंक यू, थैंक यू. Thank you sir. Next turn for the one of the next expert of management counting, Miss Gunjan Singla, to deliver a vote of thanks and token of love for beautiful lecture made by Miss Komal, BCom final year student, PG Department of Commerce, SC College Barnala. Over to Gunjan Singla. Thank you, sir. I am very grateful to our great personality, Professor Swan Singh, for giving me this opportunity. Good afternoon to one and all. I, Gunjan Singla, student of BCom final year, present here in front of you to show gratitude to our management and honorable principal ma'am who permit us to conduct this online PowerPoint presentation. I am heartily thankful to our respected HOD sir, Dr. Amrish Kumar Garg, for their blessing to us. Also, I want to express my gratitude towards our respected Professor Swan Singh, who is organizer of such great event. It is his initiative that we all are together today and have become part of this online presentation. Thank you, sir. I hope you will always keep your blessing with your students and will prove as an lighted lamp in this dark world. Further, I want to deliver my vote of thanks to Miss Komal for presenting all concepts in very elaborative and claritative manner, and thanks to Wrinkle to give conclusion of this presentation, and my respected Lisa ma'am who share her valuable thoughts with us. And at the end, thanks to my old friends for become part of this online presentation. Thanks. Thank you, sir. Thank you, Gunjan. Thank you. Very nice. Once again, thank you to all of great personality of ST College Barnala. Very first, Miss Komal, Miss Wrinkle, and Assistant Professor Lisa Roy, Miss Gunjan Singla. Thank you to all. Leave kar lage beta. Okay.